Hello students, good morning, very good morning. Hope you all are happy and safe at your home. So, me, Disha Tripathi, your English teacher, again with you, in front of you with a chapter 6. This is Geordie's Fawn. This chapter we had completed some part up to part second of this chapters in our last class, and today we move forward, that is from part third. Before going to the part third, we discussed about its summary in a very short. So right now we have discussed that Geordie is a boy, and Geordie and his father Penny moved to the forest where Penny was bitten by a rattlesnake. He quickly killed a doe, then he used the doe's heart and liver to draw out the poison of his father. Geordie saw that the doe's baby, a little fawn, was left alone. The thought of fawn kept on haunting Geordie's mind. He quietly went to his father's bedside and he asked him how he was feeling. Then he asked him to think about that fawn. He asked him to permit him to bring the fawn home. Geordie wanted to raise him. At first, Penny was in dilemma. Dilemma means confusion. Geordie argued that raising the fawn would not be a burden, but fawn could drink Geordie's milk until he started eating leaves and acorns. Geordie also said that his family was responsible for the fawn's plight. Penny agreed that it would be ungrateful to leave the fawn in the jungle alone. So he gave Geordie his permission to bring that fawn at home. He asked him to tell his mother about it before going to bring the fawn. Geordie came to the table and sat down very quietly. The mother was pouring coffee in the cup. She was taken aback when Geordie talked of bringing the fawn home. Seeing the mother's reluctant behavior, Geordie told what his father had said. Now we move to the part third of this chapter, that is given on the page number 91 of your NCERT book, Honeydew. So, movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was querying. It made no effort to rise or run. Geordie would not trust himself to move. So in this paragraph, the writer told us that when Geordie go close to that fawn, he started him so that he tumbled background. The fawn lifted its face to his. तो fawn ने, जो fawn था, डॉग का जो बेबी डॉग था, उसने अपने फेस को ऊपर करके जॉडी को देखा. It turned its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. और उसकी जो गीली गीली भीगी हुई आंखें थी, उसको देखते हुए उसने अपने गर्दन को जोर से हिलाया और दूसरी तरफ मुड़ गया. It was querying. धीरे से उसने शेक किया अपने हेड को. It made no effort to rise or run. Geordie would not trust himself to move. He whispered, "It's me." तो Geordie tries to acquaintance him with the fawn. वो कोशिश करता है कि fawn उसको पहचाने कि ये मैं हूँ जिससे हम पहले मिल चुके हैं. The fawn lifted its nose, scenting him. fawn ने अपना nose ऊपर किया और उसको सूंघा. Scenting him मतलब सूंघा, smell him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. जॉडी अपना हाथ निकालता है, बाहर निकालता है, और उसकी जो सॉफ्ट जो नेक थी उसके ऊपर अपना हाथ फेरता है. The touch made him delicious. उसने जब उसको छुआ, उसने जो fawn था उसको excited कर दिया. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. So
उसने अपनी बाहों से, जॉडी ने उस फ़ॉन को अपने बाहों में ले लिया, और उसने जैसे ही उसको बाहों में लिया, एक छोटी सी श्रिकिंग जो थी वो फ़ॉन की बॉडी में हुई. He stalked its sides as gentle as thought, though the fawn were a china deer and he might break it. So उसने बड़े ही प्यार से उसको पकड़ा जैसे कि वो चाइना डियर. और चाइना डियर यहाँ पर दिया हुआ है क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन. ऐसी डियर जो मिट्टी से बनी हुई एक डियर जो आसानी से टूट जाए, इतनी कोमलता से, इतनी सॉफ्टली उसने उस फॉन को अपनी बाहों में भर लिया. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड वेरी क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और उसकी जो बॉडी थी उसमें से ग्रास की खुशबू आ रही थी, प्यारी प्यारी सी. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. उसने उसको अपनी बाहों में ऊपर उठाया और उसके पैर हवा में लटकने लगे. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. So उसने जितना ऊपर उस fawn को अपनी गोदी में ले सकता था, उतना ऊपर जॉडी ने fawn को अपनी बाहों में भर लिया. He was afraid that it might kick and bleat its eye and smell of its mother. तो उसको, क्योंकि पास में ही उसकी जो मदर थी फॉन की, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मरी हुई पड़ी थी, तो जॉडी को ये डर था कहीं उसको अपनी माँ की खुशबू ना आ जाए, और जैसे ही उसको खुशबू आएगी वो उसके पैरों से किक देकर उसके बाहों में से निकलकर भाग जाएगा. He skirted the clearing and pushed his way into the thickest. It was difficult to fight through with his burden. और उसने कोशिश की दूसरा रास्ता बनाते हुए दूसरे रास्ते से जाने की, हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट था हाथ में फ़ॉन को लेकर लंबी लंबी झाड़ियों को दूर करके आगे बढ़ना. द फॉन्स लेग कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम. उसके जो पैर थे वो बार बार झाड़ियों में फंस रहे थे फॉन के. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस विथ प्रिकिंग वाइन्स. इट्स हैड बॉब्ड विद स्ट्राइड. His heart thrummed with the marvel of its acceptance of his. जॉडी का दिल जो था वो धक धक कर रहा था कि फॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है. खुश हो रहा था वो अंदर ही अंदर. He reached the train and walked as fast he could until he came to the intersection with the road home. और जल्दी जल्दी से उसने चलना शुरू किया जब तक कि वो रोड पर नहीं पहुंच जाता. He stopped to rest and sat the fawn down on the dangling legs. It reared on them, it looked at him and bleated. He said enchanted, I will carry you after I get my breath. तो वो थक चुका था, उसने उसको नीचे उतारा थोड़ी देर और उससे धीरे से बोला, मैं वापस से तुमको गोदी में लूँगा, पहले मैं थोड़ी अपनी थकान दूर कर लूँ, थोड़ा सांस ले लूँ. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसको तभी अचानक से ध्यान आया कि उसके फादर ने उसको बताया था कि अगर आप फ़ॉन को एक बार कैरी कर लोगे और उसके बाद में उसको नीचे उतार दोगे तो वो आपको फॉलो करेगा, आपके पीछे पीछे जिधर आप जाओगे उधर वो जाया करेगा. He started away slowly. उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया. The fawn stared after him. fawn ने उसको देखा. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. थोड़ी देर fawn उसके पीछे पीछे चला और फिर it was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle him. और जैसे ही फॉन ने उसको फॉलो करने लगा, जॉडी को मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो फॉन था वो उसको एक्सेप्ट कर चुका है, उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर चुका है और उसके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come to him. He dared not alarmed it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. और उसको बहुत खुशी हो रही थी और उसने जल्दी से उस फॉन को अपनी गोदी में उठाया, अपनी दोनों बाहों में भरा और जल्दी जल्दी उसको अब कोई परेशानी नहीं हो रही थी, फॉन को अपनी बाहों में लेकर चलने से थकान महसूस नहीं हो रही थी. His arms began to ache and he was forced to stop again. और अब उसकी बाहें वापस से दर्द होने लगी थी, इसलिए उसको थोड़ी देर रुकना था, सांस लेनी थी. When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो चलने लगा उसको नीचे उतार कर, तो जो फॉन था उसने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया.
He allowed it to walk a little distance. थोड़ी देर जॉर्डी ने उसको अलाउ किया उसके पीछे पीछे आने के लिए. Then he picked up again. उसके बाद में उसने उसको वापस से अपनी बाहों में ले लिया. The distance home was nothing. He could have walked all day into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. थक चुका था वो, पसीना आ रहा था. उसके लिए डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने जो फॉन था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. इस बात की उसको खुशी थी, इसलिए दूरी उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती थी. और बहुत गर्मी थी, पसीना आ रहा था, लेकिन बीच बीच में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वो उसको सुकून दे रही थी. The sky was as clear as spring water in blue China. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. धीरे धीरे सुबह होने को थी. He fumbled with the latch and was finally obliged to shut down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house to Penny's bedroom with the fawn walking behind him. और वो घर पहुंचा और उसने एक आइडिया आया. उसने पैनी के रूम में गया और उसके पीछे पीछे फॉन भी उसको फॉलो किया. But at the steps, the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. जहाँ पर पैनी अपनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था. Jody called, "Pa, look." Jody go close to his father. उसके फादर के पास गया और देखा. "Look, Pa, look." देखिए. Penny turned his hand. अपने सर को उसने मोड़ा. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. He seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. Penny ने देखा जॉर्डी की आंखों में वो उतनी ही तेज चमक थी जितनी चमक फॉन की आंखों में थी. It means he was very happy. He said, "I am glad you found him." So Penny said him that मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि तुमने इसको ढूंढ लिया है. Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. Wobbled मतलब jumped. जो जॉडी था वो किचन में गया और उसके पीछे पीछे फॉन भी कूदता फांदता हुआ उसके पीछे आया. A pan of morning's milk stood in the kitchen cafe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. उसने मिल्क में से, दूध में से क्रीम को निकाला जग के अंदर. He poured milk into a small gourd. और उसने जो दूध था उसको gourd में निकाल लिया. He held out to the fawn. It buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously with spilling over the pour. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them to the fawn's soft wet mouth. Yes, fawn was a little baby, so he doesn't know how to drink from the gourd. So Jody used his fingers. He dipped his fingers in the milk and thrust them to the fawn's wet mouth. अपनी उंगलियों को उसने दूध में भिगोया और उसके बाद में उन उंगलियों से जो फॉन था उसके मुंह में उसने उस दूध को डाला. एक सख्त greedily और उसने पी लिया वो. When the withdrew him, it bleated fiercely and buttered him. He dipped his finger again as the fawn sucked. और वापस से उसने अपनी उंगलियों को दूध में भिगोया और उसको फॉन के मुंह में वापस से डाला. फॉन ने उसको सक कर लिया. He answered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. और ये बार बार उन्होंने रिपीट किया. It stamped its small hoofs impatiently, long as he had his finger below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. और जब वो पी गया, संतुष्ट हो गया उस दूध से, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली. It was ecstasy to feel tongue against his hand. It smelled tail flicked back and forth. तो उसकी जो पूंछ थी वो आगे पीछे घूम रही थी. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. और उसने अपने जो अंतिम दूध था, पूरा दूध, it means उसने पूरा दूध खत्म कर दिया. So this means that Jody, Fawn and Penny, three of these characters were very happy with this after Jody bring that Fawn to his home, and how he how he brought up the fawn with love and affection. This is defined in this chapter very nicely. So this is your chapter, and PDF is already provided to you. So go through it, read it carefully, and if you have any doubts, clear it in our next Zoom meeting. Thank you very much.